Hello students, welcome to AcuLearn Science classes. I am Aakanksha Ahlawat and today we are going to learn very important topic of life processes, that is respiration. In the previous video I discussed about nutrition and digestion. Link is given in the description. So let's start with today's topic, that is respiration. So first we will discuss about what is difference between breathing and cellular respiration. Human respiratory system involves breathing, exchange of gases and cellular respiration. So both are basically a part of human respiratory system. So what is breathing? Breathing involves process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. So it's just physical process जिसमें oxygen inhale की जाती है and CO2 is released. Whereas in cellular respiration, it is a process of breaking down glucose to produce energy. इसमें energy produce होती है by breaking down of glucose, which is then used by cell to carry out the cellular function. So इसमें ये कैसा है बायोकेमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस and breathing takes place in the lungs, also involves nose, mouth and pharynx, whereas in cellular respiration, respiration takes place in the cells, so it involves cells. And breathing, it is a voluntary as well as involuntary physical process, because breathing during sleep is involuntary क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, दैट्स वाई ड्यूरिंग स्लीप ब्रीदिंग इज इनवॉलेंट्री, बट इट इज़ वॉलेंट्री when we sing, speak, swim or for relaxation techniques. So breathing can be involuntary and voluntary both, whereas respiration, cellular respiration is involuntary chemical process because it is not under our control, it is taking place in the cells. And in breathing, there is no production of energy, whereas in cellular respiration, energy is produced and released in the form of ATP. Respiration में ATP की form में energy produce होती है, जबकि breathing में no energy is produced. In breathing, it occurs outside cells and it is called the extracellular process. It occurs between the organism and the external environment because the organism takes in oxygen and release CO2, so it takes place between organism and environment. लेकिन जो cellular respiration है, it occurs inside the cell, so it is called the intracellular process. जो एक cell के अंदर process हो रहा है उसको intracellular process बोलते हैं. Cellular respiration is intracellular process. Breathing में कोई भी enzyme यूज नहीं होते, नो enzymes are used during this process, लेकिन in cellular respiration a large number of enzymes are used during this process because it is taking place in the cytoplasm, in the mitochondria, so several cytoplasmic enzymes and mitochondrial enzymes are involved in this process. And breathing में जो associated organs हैं, it involves like nose, lungs and it पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग वाले प्रोसेस में, वेरेज इन सेलुलर रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये सेल के अंदर होता है और सेल के ऑर्गेनेलीज भी इंक्लूड होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है. अब देखते हैं रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें CO2 को एलिमिनेट किया जाता है एंड ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड. Animals and plants have different means of exchange of gases. Plants का हमने previous class में भी discuss किया था. Plants में exchange of gases takes place through stomata, whereas in animals में अलग अलग ways हैं exchange of gases के लिए. Earthworm में देखें तो it takes place through skin, fishes में देखें तो it takes place through gills, in human beings देखें तो it takes place through lungs. At a cellular level, respiration means the burning of food to generate the energy needed for other life processes. So burning of food, food से हमको glucose मिलता है, तो that glucose से basically energy मिलेगी. It is broken down at the cellular level. And जो ATP generate होगा इस process से, that is used for several other life processes. Cellular respiration may take place in the presence or absence of oxygen. If it taking place in the presence of oxygen तो इसको aerobic process बोलेंगे, and if it taking place in the absence of oxygen तो इसको anaerobic process बोलेंगे, anaerobic respiration बोलेंगे. So glucose जो food से मिला in the presence of oxygen, it gives lot of energy
in the form of ATP, carbon dioxide gas is released and water is also produced, and this energy it can be used for several life processes like muscle contraction and other requirement of the body. So ये basically aerobic respiration का equation है यहाँ पे. Now we will see cellular respiration. Cellular respiration is a set of metabolic reactions occurring inside the cells to convert biochemical energy obtained from the food into a chemical compound called adenosine triphosphate ATP. इसी को energy currency of the cell भी बोलते हैं. तो cellular respiration जो होता है ये एक set of metabolic reactions हैं जो किसी cell में होते हैं to convert biochemical energy obtained from food. तो फूड से जो बायोकेमिकल एनर्जी मिली, फूड से ग्लूकोज मिला और उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से एटीपी जनरेट होगा. And metabolism refers to a set of chemical reactions carried out to maintain the living state of the cells in an organism, and these can be divided into two categories. They are catabolism and anabolism. तो catabolism में क्या है? Breaking there is the process of breaking molecules to obtain energy, whereas anabolism में क्या है? Process of synthesizing all compounds required by the cells. So catabolism में breaking down of molecules is taking place और जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है. So basically respiration जो है वो catabolism में आता है. Therefore respiration is a catabolic process which breaks large molecules into smaller ones, releasing energy to fuel cellular activities. क्योंकि एनर्जी जो ATP की फॉर्म में बनी उसको that is used for several cellular activities. So glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain are the important process of cellular respiration. मतलब cellular respiration in presence of oxygen. तो glycolysis cytoplasm में होगी, Krebs cycle and electron transport chain ये mitochondria में होगी. So they are very important in cellular respiration. And respiration is a catabolic process जिसमें breaking down of large molecules into smaller molecules is taking place and energy is released which is used to fuel several cellular activities. So this is diagram of cellular respiration जिसमें glycolysis वाले process में glucose is breaking down into pyruvic acid. इसमें भी 10 steps involved होते हैं, but you just need to know that glucose is breaking down into pyruvic acid in the cytoplasm और इस process से 2 ATP बनते हैं and then this pyruvic acid enters the mitochondria and it forms acetyl coenzyme A and which enters Krebs cycle, and Krebs cycle is also called tricarboxylic acid cycle because ये pyruvic acid is 3 carbon molecule and इसमें CO2 रिलीज होगा and several stages पे NADH and ATP is formed and और फिर that enters in electron transport chain और उससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे एंड दे आर रिलीज्ड इन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. जो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स होती हैं उसके बीच में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एंड फिर वो एटीपी सिंथेज की हेल्प से दैट like 2.5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल फॉर्म 1 ATP. सो टोटल इस प्रोसेस से 36 ATP बनेंगे. तो 36 plus 2 ATP like total 38 ATPs will be formed from one glucose molecule in aerobic respiration and CO2 will be released, H2O will also be formed और इस process में oxygen is taken in by the cell. इसमें oxygen की requirement होती है because this is basically aerobic process. And now we will see breakdown of glucose by various pathways. And so I discussed nutrition in organism in the last video, and the food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. जो food taken in होता है वो काफ़ी सारे life processes को energy provide करता है. So diverse organism do this in different ways.
some use oxygen to break down glucose completely into CO2 and hydrogen water, and some use other pathways that do not involve oxygen. तो जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व करते हैं उनको एरोबिक बोलेंगे, जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं करते उनको एनारोबिक बोलते हैं. And in all cases the first step is the breakdown of glucose, which is a 6 carbon molecule, into 3 carbon pyruvate molecule. And ये process cytoplasm में होता है, this one. And further the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. ये इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है एंड एनर्जी रिलीज होगी, बट वो काफ़ी कम है, लाइक जस्ट 2 ATP molecules. So this is taking place in the absence of oxygen. So this process takes place in yeast during fermentation, and since this process takes place in the absence of oxygen, so इसको बोलते हैं anaerobic respiration. And breaking down of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria in the presence of oxygen, and CO2 and water will be released and lot of energy is produced. जो हमने just अभी previous slide में देखा, around 38 molecules of ATP are produced. So it is aerobic respiration, and the process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide, and the other product is water. And since this process takes place in the presence of oxygen and mitochondria में हो रहा है, ये aerobic respiration है. And the energy and the release of energy in this aerobic process is lot greater than in the anaerobic process. Anaerobic process में हमने देखा just 2 ATP बन रहे थे, जबकि यहाँ पे around 38 ATPs बन रहे हैं. And sometimes when there is lack of oxygen in the muscle cells, जब muscle cells में lack of oxygen है, like during exercise or workout हम देख सकते हैं, and when there is lack of oxygen in muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken, and here the pyruvate is converted into lactic acid. Pyruvate is converted into lactic acid, and which is a 3 carbon molecule. और इसमें CO2 और वाटर वगैरह नहीं बनता, सिर्फ एनर्जी दैट विल बी जस्ट 2 ATPs विल बी फॉर्म्ड, एंड लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है. एंड दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं और लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलता है मसल्स को. ये रिएक्शन तब होगा in the lack of oxygen. Absence of oxygen में ethanol and CO2 will be produced, and lack of oxygen में lactic acid will be produced, and in presence of oxygen जो कि mitochondria में होगा, CO2 and water will be produced. Energy in सब में release होगा, but maximum energy will be produced in presence of oxygen, which will be around 38 ATP. और बाकी in absence and lack of oxygen में दोनों में 2 ATPs of energy will be produced, which is much lesser than that of aerobic respiration. I hope this is clear. You have to keep this chart in mind, like what are the 3 fates of glucose. Like there are 3 fates in the presence of oxygen, lack of oxygen and absence of oxygen, और उनसे क्या क्या बन सकता है. You have to keep this in mind. और ये ग्लूकोज से पायरुवेट वाला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, एंड उसके आगे वाला प्रोसेस एरोबिक वाले में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. अब हम देखेंगे व्हाट इज ATP. ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस. अभी हमने देखा ATP बनता है और जो कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस में यूज होता है. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. यहाँ पे देख सकते हैं ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके ये ADP और फॉस्फेट मतलब ATP बन जाएगा. It is an endothermic process in the cell, then use this ATP to drive the reactions. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released. जो थर्ड वाला जो फॉस्फेट है उसके ब्रेक होने पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, एंड एनर्जी रिलीज होती है which is used for various processes.
आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, दिस इज एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक राइबोस शुगर है, और ये जब ये थर्ड वाला यहाँ से ये ब्रेक होगा तो लॉट ऑफ एनर्जी अराउंड 30.5 किलो जूल energy will be released, and the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. And in these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. अब हम देखेंगे respiration in plants. We have seen that plants exchange gases through stomata, and the large intercellular spaces ensures that all cells are in contact with air. क्योंकि प्लांट्स के सेल्स में काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, तो ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हेयर. यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को डिफ्यूजन बोलते हैं. दे कैन go into the cell or come out into the air. The direction of diffusion depends on the environmental conditions and the requirement of the plants. So basically direction of diffusion plants की requirement पे depend करता है, because at night जब photosynthesis नहीं हो रहा होता तो CO2 को plant eliminate ही कर देता है. So CO2 elimination is the major exchange activity going on, but during the day CO2 generated during respiration that is used for photosynthesis. हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो CO2 जो जनरेट हुआ रेस्पिरेशन से वो डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है. Hence there is no CO2 released during the day, but दिन के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट. So दिन के टाइम पे plants release oxygen and रात के टाइम पे they release CO2. So unlike animals and humans, plants do not have any specialized structure for gaseous exchange, and they have stomata present in leaves and lenticels present in stems, which are involved in the exchange of gases. And compared to animals, plant roots, stem, leaves respire at a very lower rate. Here you can see exchange of gases is taking place. Oxygen, it is taken in oxygen and releasing carbon dioxide. This is majorly taking place at night time, and roots also respires. So now we will see respiration in lower animals. Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and getting rid of the CO2 produced. And lower animals lack a sophisticated respiratory systems like lungs and alveoli, जो कि higher organisms के पास होते हैं, but they have evolved some method for removal of CO2 produced inside their body and taking in oxygen. So respiration in them takes place by simple exchange mechanisms, and animals like earthworms take in gases through their skin. Skin से ही exchange of gases takes place in earthworm, and fishes have gills for gaseous exchange. अब हम देखते हैं like since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, so the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. So fishes में rate of respiration is very fast. So fishes take in water through their mouths and force it past their gills, where the dissolved oxygen is taken up by the blood, and inca rate of respiration is much higher than any terrestrial organism. Insects have a tracheal system, which is a network of tubes through which air circulates and gases exchange takes place. So ये arthropods में होता है basically. इनमें tracheal system होता है जिसमें network of tubes इनकी पूरी body में रहता है, and which circulates and gaseous exchange takes place through this. And frogs breathe through their skin, which is when in water, and through their lungs when on land. So ये जब पानी में होते हैं तो skin के through exchange करते हैं gases को, and जब land पे होते हैं तो they have lungs for that purpose. So now we will see respiration in humans, and the human respiratory system is more complex and involves breathing, exchange of gases, and cellular respiration.
So it is more complex as compared to lower organisms. And a well-defined respiratory system helps with breathing and the exchange of gases. हमारे पास एक well-defined respiratory system होता है. And breathing involves the inhalation of oxygen and exhalation of CO2, carbon dioxide, and the gaseous exchange takes place in the lungs, and oxygen is supplied to all the cells of the body. Cellular respiration takes place in each and every cell of the body. I hope it's clear. So this is human respiratory system, and in human beings, air is taken into the body through nostrils. So nostrils के through air is taken in, and the air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. So यहाँ पे fine hairs होते हैं जो which lines the passage, and the passage is also lined with mucus, which helps in this process. So इस air को kind of filter किया जाता है, and from here the air passes through the throat, trachea and into the lungs. So air basically passes through this pharynx, larynx, trachea, and then it goes into the lungs. And rings of cartilage are present in the trachea. Here you can see this is the rings of cartilage जो trachea में होती है, and these ensures that air passage does not collapse, कि air passage यहाँ पे collapse ना हो जाए, ये उसको collapse होने से बचाता है. And within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminates into balloon-like structures. Here you can see it is the passage divides into smaller and smaller tube-like structure, जो कि last में terminate हो रहे हैं in the alveoli. ये balloon-like structure होते हैं, and the alveoli provides large surface where the exchange of gases can take place. So basically alveoli ये जो balloon like structure है यहीं से exchange of gases takes place होता है, and the walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. So इनके आसपास बहुत सारी network of blood vessels होती हैं जहाँ से exchange of gases होता है. यहाँ पे मान लो if we inhale then amount of oxygen is very high in the alveoli, so यहाँ से oxygen diffuse होके blood में आ जाएगी, and blood में CO2 ज़्यादा है तो blood का CO2 इसमें diffuse हो जाएगा, and then we exhale that CO2 out of our body. So now we will see respiratory system. The human respiratory system involves nose, nasal cavities, pharynx, larynx, trachea जिसको windpipe भी बोलते हैं, bronchi, bronchioles and alveoli. Bronchioles and alveoli are enclosed in pair of lungs. So ये lungs के अंदर होती हैं bronchioles and alveoli. And the rib cage, muscle associated with rib cage and diaphragm all helps in inhalation and exhalation of gases. So rib cage जो हमारे lungs को protect करता है, bones हैं ये, and muscles associated with rib cage ये हैं intercostal muscles, and diaphragm जो कि dome shaped का होता है lungs के just नीचे. You will see in the diagram, I'll show you. And the exchange of gases takes place between an alveolar surface and surrounding blood vessels. So alveoli का जो surface होता है वहाँ से और आसपास के blood vessels से वहीं से exchange of gases होता है. So alveoli provides a large surface area for exchange of gases. If the alveolar surface were spread out, अगर हमारी lungs में जितने भी alveoli हैं उसके surface को spread out किया जाए तो it would cover about 80 meter square of the area. जो कि आप इमेजिन करो हमारी बॉडी का सरफेस एरिया कितना होगा, बॉडी एक्सटर्नल बॉडी जो हम देख सकते हैं, इट इज़ अराउंड 1.73 मीटर स्क्वायर फॉर ए 70 kg मैन. सो ये उससे आप लगभग लगा लो 80 टाइम्स ज़्यादा है एल्वियोलाई का सरफेस एरिया विच इज़ 80 मीटर स्क्वायर. और so this for efficient exchange of gases it is very important, higher surface area of alveoli. So now we will see physiology of respiration, but first you should know what is inhalation and exhalation. The process of taking in air rich in oxygen उसको बोलते हैं inhalation, and the process of giving out air rich in carbon dioxide that is called exhalation. And one breath comprises one inhalation and one exhalation. So एक inhalation और एक exhalation का round एक one breath को बनाता है.
and a person breathes several times a day. और 1 मिनट में जितना टाइम एक पर्सन ब्रीथ करेगा उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट. सो फॉर अ हेल्दी adult it is around 12 to 20 times per minute. So breathing in humans is facilitated by action of internal intercostal and external intercostal muscles attached to the ribs. ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो इंटरनल साइड से रिब से अटैच्ड होती है उनको इंटरनल इंटरकोस्टल बोलते हैं, जो एक्सटर्नल साइड से अटैच्ड होंगी उनको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं. And the diaphragm. So basically these intercostal muscles and diaphragm they helps in breathing. When the dome-shaped diaphragm contracts and becomes flattened and the rib cage is expanded due to the action of intercostal muscles, the volume of the lungs increases and the pressure then drops down and the air from outside gushes in, and this is inhalation. So basically जब डोम शेप्ड डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाएगा और रिब केज है वो एक्सपैंड हो जाएगी ड्यू टू एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स. उसकी वजह से लंग्स की जो कैविटी है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी. सो इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा लंग्स के अंदर का. तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो बाहर से अंदर एयर आनी स्टार्ट हो जाएगी. You can see here in this diagram, this is dome shaped diaphragm. It is contracting के बाद ये flat हो जाएगा and rib cage and all they expand and then air will gush inside the lungs. Now we will see. To exhale the diaphragm relaxes and becomes dome shaped again. So exhalation में diaphragm dome shaped हो जाएगा and the chest cavity contracts due to the action of intercostal muscles. So इसकी वजह से volume inside the lungs decrease हो जाएगी. So pressure inside the lungs will increase and the air is forced out of the lungs. So inhaled air increases the concentration of oxygen in the alveoli. जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज. सो ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स. सो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, ब्लड वेसल्स में आ जाएगी. एंड द ब्लड कमिंग फ्रॉम सेल्स हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन आउटसाइड एयर and thus carbon dioxide simply diffuses out of the blood vessel into the alveoli. So blood vessel से CO2 alveoli में आ जाएगा and alveoli से oxygen blood vessels में चला जाएगा and thus breathing takes place due to the combined action of intercostal muscles and the diaphragm, while the exchange of gases takes place due to simple diffusion in the alveoli. I hope it is clear. You should know how inhalation takes place. डायफ्राम उसमें फ्लैटेंड हो जाता है बिकॉज वो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेज, सो एयर गशेज इनसाइड. दिस इज इनहेलेशन. बट इन एक्सहेलेशन इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड डायफ्राम रिलैक्स होकर अगेन डोम शेप्ड हो जाता है जिसकी वजह से वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स डिक्रीज, सो प्रेशर इंक्रीज एंड एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग. इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन. एंड एल्वियोलाई में किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, जब हम सांस लेते हैं इनहेलेशन के टाइम पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सो दैट विद सिंपल डिफ्यूजन वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस. ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में आ जाएगी, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में चली जाएगी. इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस एंड दिस इज एक्सहेलेशन प्रोसेस. अगेन रिलैक्स हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड प्रेशर अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो देन इट हैज टू बी फोर्स्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. सो व्हाई डू वी नीड लंग्स? लंग्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? In unicellular organism like amoeba, exchange of gases takes place through a general body surface by osmosis. So, unicellular organisms में तो simply exchange of gases can take place.
but in lower organism like earthworm, the gaseous exchange takes place through their moist skin. इनकी skin से ही moist skin से ही exchange of gases is taking place, and the requirement of oxygen is sufficiently met in these ways. मतलब इनकी requirement of oxygen easily in ways से पूरी हो जाती है. But as the animal starts becoming more and more complex, for example humans, the requirement for oxygen cannot be met alone by diffusion. सिर्फ diffusion से हमारा काम नहीं चलेगा, because हमारी body में बहुत सारे cells हैं, वहाँ तक तो oxygen पहुँच ही नहीं पाएगी by simple diffusion. Moreover, diffusion will not be able to supply oxygen to the deep seated cells. जो deep seated cells है वहाँ तक oxygen जा ही नहीं पाएगा. So this difficulty has led to the evolution of a more complex mechanism of gaseous exchange, and that is development of lungs. सो इसकी वजह से इवोल्यूशन के थ्रू मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आ गया गैसियस एक्सचेंज के लिए, विच इज डेवलपमेंट ऑफ लंग्स. एंड द एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर नेसेसरी गैसियस एक्सचेंज. एक फैक्ट आपको बताती हूँ. इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक अराउंड 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. So अगर सिंपल डिफ्यूजन से ही ये प्रोसेस होता तो 3 साल लग जाते ऑक्सीजन हमारे लंग से हमारे टोज तक पहुंचने में. सो वी शुड थैंक द हेमोग्लोबिन in our body, in our blood, that is transporting oxygen to each and every cell of our body. So this is basically diagram of the lungs, of human lungs. Left lung has 2 lobes, and right lung has 3 lobes: lower lobe, middle lobe, and upper lobe. And this is trachea, and left primary bronchus. This is right primary bronchus. It is further branching into bronchioles, and लास्ट में इसमें आ जाते हैं alveoli. So thanks for watching this video, and please do like and share this video and subscribe to my channel. Thanks.